Assalamu alaikum Nazreen, Adabars. Hope you are all hale and hearty. As the saying goes, your body is your temple. Respect it, nourish it, love it, mentally and physically. Well, this might be a very ancient, sacred formula. But of course, we should not forget that modern medical technology and with the best medical care, the life expectancy has increased dramatically. And of course, we should also consider the social media that has been creating an awareness how to adopt a healthy lifestyle. Watch what you eat, because what you eat, you are. जैसे कि कहते हैं ना, जो आप खाएंगे आप वैसे ही नजर आएंगे. But because of the technology and the awareness that's been created, आपको पता है अब now 60 is now 40. इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि अगर आप 60 साल की उम्र के हैं तो आप अब 40 साल के होंगे. ये हमारे साथ जो गेस्ट है वो भी आपको इस चीज़ से इस पे बताएंगे और इत्तेफाक करेंगे. अगर आपने अपनी सेहत रखनी है ऑब्वियसली, तो ओबीस जो है उनको आपको पता है, आपको भी पता होगा कि ओबेसिटी से आपको डायबिटीज़ 2 फौरन हो जाती है, आपकी फैटी लिवर होती है, आपको हार्ट की कंडीशन भी हो जाती है, एंड मैनी न्यूमरस एलिमेंट्स you can come across. This and much more we will be talking to my guest, inshallah. But before that, I would like to touch on a condition, on a medical condition, which is called Guillain-Barré syndrome. I don't think my community, our Asian community, is much aware of this condition, because this is a rare disease which happens 1 in 100,000. So my guest, who is a qualified consultant physician, will be able to explain it to us. कि ये क्या है और इसकी वजूहात क्या हैं, इसके symptoms क्या होते हैं. हालांकि, please first of all I would like you to welcome my esteemed guest, Dr. Arshad, a consultant physician in geriatric disease and medicine, specializing in Parkinson and dementia. So please welcome Dr. Radar. वालेकुम डॉक्टर साहब. आई अप्रिशिएट दैट आप इतनी मसरूफियत के बावजूद सोशल वॉइस में बहुत अरसे के बाद आए हैं, लेकिन आपको मैंने इसलिए रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा सा वी वांट टू टच ऑन जीबीएस. जीबीएस एज फार एज आई नो, लाइक आई सेड, इट्स 1 in 100,000, ठीक है. और इसके फिलहाल जो सिम्टम्स नज़र आए जो कि मैंने देखे हैं वो ये है कि it starts by tingling in the toes, and there's no feeling in your feet and legs, and when it gradually travels up onto your kidneys and liver and heart, it can be fatal as well. Sure, yes. ठीक है ना डॉक्टर साहब? Yes, see. तो ये जो Guillain-Barré syndrome को GBS syndrome भी कहते हैं, it's a neurological disorder. Okay. So what basically happens is it mainly develops post-infection. It's okay. So it can happen few days, few weeks, or even few months after an infection. Okay. Or these infections could be just a simple viral infection, it could be a bacterial infection, but at times it has been seen that people who have had surgery or trauma, they can also develop after that this syndrome called Guillain-Barré syndrome. What happens is basically that we produce antibodies when there is an infection. They fight the infection. But what happens in Guillain-Barré syndrome is that those antibodies which are developed for a certain type of infection, it sort of cross-relates with the covering of the nerves. Okay. And that causes the problem, the paralysis, the problems with sensations, problems with muscle weakness. So it's sort of an autoimmune disorder. The body is producing things against its own nerves. और उसकी क्या वजूहात क्या होती हैं डॉक्टर साहब? Some people are
you're unlucky to have this, really. I mean, it can develop to anyone. So nobody's more. You are not predisposed to have it more than I do. Okay. It just happens randomly, and it's quite rare. 1 in 100,000, as you said. Yeah. So, क्या होता है कि when you get this problem, you initially develop a non-specific type of symptoms. ऐसे नहीं कोई tingling हो रही है ना, कोई pain सी हो रही है. कभी sometimes people get a back pain as well. Back pain, neck pain? Back pain, mainly back pain. Mainly back pain. Back pain. They get a bit of numbness, tingling in the feet, in the hands. That's the starting symptoms. लेकिन डॉक्टर साहब यही symptoms किसी और भी condition में भी तो हो सकते हैं, तो maybe people are unable to detect exactly के कौन सी मतलब के condition है जिसमें. But usually, as I was telling you earlier before the program started, that it's a diagnosis of exclusion. It's quite rare. Quite rare. You think of something else first, then it yes, exactly. come to this diagnosis. Yeah, yeah. So क्या होता है कि जब ये शुरू होता है तो ऐसे numbness, tingling, फिर आहिस्ते से क्या होता है आपकी feeling completely चली जाती है, पैरों में start होती है पहले. I don't know why there's some disturbance. Control room आप check करें, disturbance हो रही है. So एक मैंने कहता है ascending paralysis है. उसका मतलब है कि नीचे से शुरू, पैरों से शुरू ऊपर travel करती है. तो पहले मैंने कहा there's tingling, there's numbness, then slowly you lose the sensations in the feet, and as it goes up and up and up, and then once the sensation is lost, then you can get weakness after that. Okay. Paralysis of the legs. Okay. And it can travel up, and it can sort of stops in legs most of the times, or you can get weakness in the arms, but sometimes it can also cause weakness in the muscles of the respiration. That must be dangerous. That can be dangerous. You can stop breathing, and people need to be on a ventilator. It can also affect these nerves which control the blood pressure, and you can or pulse rate, which is called an autonomic nervous system. When it affects that type of nervous system, it can cause problems with big changes in the blood pressure, big changes in the pulse rate, which can also be dangerous. Okay. Achha, there's another thing. It's called Bell's palsy. So, ये Bell's palsy जो है और ये GBS, are they intertwined? No, they're not intertwined. Separate? They're separate things. What can happen, as I said before, is that Guillain-Barré can affect different nerves. When it affects different types of nerves, it can also affect the facial nerve, the nerve which controls the face, the muscles of the face. मतलब ये कि GBS can cause Bell's palsy, but it is not Bell's palsy. It's two different things. Yeah, I know. But Bell's palsy, it's a facial paralysis. The facial paralysis, which can, Bell's palsy is one type of facial paralysis. You can get a facial paralysis because of stroke as well. But the signs on the face are a bit different. Okay. And it can, as I said, these nerves can get affected different places. Hence the Bell's palsy happens. अच्छा, okay. तो डॉक्टर साहब तो ये बताइए कि जो Bell's palsy है इसके क्या symptoms होंगे, क्या वजूहात होती हैं? Bell's palsy, as मैंने कहा ना वो एक किस्म की different entity altogether. People can get Bell's palsy again. There's been no consensus. Nobody knows why Bell's palsy happens. अच्छा, ये बताएं, Bell's palsy, is it reversible? It is reversible, but sometimes it's not. People can have facial paralysis which lasts all their life. Sometimes it's partially, it recovers. Sometimes it fully recovers. There's no hard and fast rule which ones can recover fully. It depends if you have too much, Bell's palsy. Some people have subtle paralysis, some people have a little bit more. Depends upon the severity of paralysis in the face as well. So how long does it normally take for Bell's palsy as well as GBS to completely recover?
It depends on the condition and individual. It depends upon the severity. No, as I said before, some people with Guillain-Barré develop paralysis of all the 4 limbs as well. Okay. And they can take weeks to months to recover. Some can take few weeks to recover. Some don't recover at all. Acha. And some can die. So there are different courses of the disease as well. Okay. But usually most people do recover from Guillain-Barré. Okay. Most people do recover. Okay, okay. And Bell's palsy also most people, there is some subtle signs still remain, but usually people do recover from this. They do. मतलब complete, बिल्कुल normal हो जाते हैं, facial features वगैरह. Usually happen, but there is some very mild which if people don't know you, they may not realize that you have had a facial Bell's palsy. But I know someone, a senior lady, she has facial disfigurement, and in fact she went for a plastic surgery as well, but in spite of that her features remain. मतलब उनका जो है ना लकवा है तो मुंह उनका थोड़ा सा disfigure हुआ, तो वो क्या चीज़ है? Is that Bell's palsy? There might be something else. As I said, you can have paralysis of face due to different other reasons as well. Okay. Bell's palsy is a certain type of facial weakness which happens mainly post-stress, post-infection. They say it is the reason, but it's as I said, facial paralysis can be of different types, and Bell's palsy is one of them. Bell's palsy is one of them. Acha. Now let's come back to आपकी जो speciality है. असल में एक्चुअली Guillain-Barré को खत्म करते हैं. अच्छा चले. कि ट्रीटमेंट्स क्या होती है? ट्रीटमेंट्स हाँ बताएं. ट्रीटमेंट्स और इसका सिम्टम्स तो हमने देख लिए. ट्रीटमेंट्स ये होती है कि यूजुअली क्या होता है, what they do is basically they give immunoglobulins. Okay. And also plasma, and they can do plasma exchange. What happens is the blood has got 2 components: the cells, white cells, red cells, and there's got plasma. Plasma. So they take the plasma out because the antibodies are in the plasma and give you new plasma, so that they take these antibodies out which cross-react with the nerves, particularly the covering of the nerves, which is called myelin. So that's how it's treated. And then you need a lot of physiotherapy and rehabilitation to get you back on the feet. But usually, I said, most people do recover completely, inshallah. अच्छा, तो मतलब ये जो मैं again I'll come back to my previous question कि फिर हम लोगों में इस चीज़ की awareness है नहीं. हम लोग इस चीज़ को tingling in the toes and numbness and back pain, we can take it for something else. You could take it something, but if it's not getting better, things, you don't want to alarm people saying, oh, any numbness and tingling is this problem. But if things are not improving after numbness and tingling and back pain, they are developing weakness in the arms and legs, they should consult their general practitioners or they should go to the hospital to get, particularly if they have had any diarrheal illness or a viral illness or recent surgery or recent trauma. That can sort of is sort of, if there's a temporal association with these things, that if they have traveled abroad, लोग पाकिस्तान इंडिया वगैरह जाते हैं, वहाँ पे कैच करते हैं डायरिया वगैरह, तो उससे भी you can get पानी गलत अगर है. But as I said, everybody who gets infection or don't necessarily get Guillain-Barré, but there's some people who are unlucky. But after how long do you really clearly show the signs that you have Guillain-Barré syndrome? It can develop a few days to few weeks after the illness. Few weeks after the illness? Yeah. Okay. We know somebody, we both know somebody who had been to Pakistan and then they were there for a few months, had some illness there and developed this problem a few weeks after that, isn't it? So it's the course varies from few days to few weeks. 4 weeks. And it can take like months sometimes. Months or sometime. Okay. Anything else that you'd like to talk about on GBS? No, we'll go to Parkinson's now. Now we will go to Parkinson, yes. Parkinson, Dr. my very first question is, normally it's associated that it happens only to people जो के ज़रा उम्र रसीदा हैं, right? उम्र रसीदा मतलब एज, अब आपको पता है ना आजकल तो अब मतलब इतनी अवेयरनेस हो गई है, लोगों में इतने कॉन्शियस हो गए, दे वॉच व्हाट यू ईट और क्या हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए अडॉप्ट किया हुआ है,
तो उम्रें हमारी सबकी दराज हो रही हैं, है ना? तो उसमें ये होता है ना कि वो कहते हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट, सम पीपल लिव टू ईट एंड सम पीपल ईट टू लिव। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। तो पार्किंसन जो है ये कहा जाता है कि भाई बुढ़ापा आ गया, तो normally you immediately associate that. Yes, I mean Parkinson's disease is a disease of middle to late age. Middle to late age. Okay. But it's not necessary that if you're young you may not have it. I've seen people in Really? 30s, 40s, they can develop Parkinson's disease, but it's rarer in younger people, but it's commoner in middle to older age. And what I wanted to clarify to your audience, that is Parkinson's disease is, there's thing called Parkinsonism. So that is what Parkinsonism means, that if somebody has got problems with slowness of movements, okay, they slow down. On top of that, they have stiffness. वो stiff हो रहे हैं. Okay, okay. या उनको shaking tremor हो रहा है. हाँ. या वो stable नहीं है, जब वो खड़े होते हैं तो गिर विर जाते हैं. Is that the initial stage of Parkinson? No, I'm just trying to say what Parkinsonism means. Okay. So Parkinsonism means that if somebody has got slowness of movements plus tremor or rigidity or postural instability. What that means, if they are standing up or if they are not stable on their feet. So you need to have slowness of movements, then one of these three things, tremor, rigidity or postural instability, then we call that they got Parkinsonism. Now, there are different causes of Parkinsonism. Okay. And one of the causes Parkinson's disease. One of the causes is Parkinson's disease. There are other causes which are Parkinsonism, but they are not Parkinson's disease. Really? So even Alzheimer's, dementia can cause these symptoms. There are other diseases which I don't want to go into because it will confuse the audience. Yes. We'll just say that there is a condition called Parkinsonism and idiopathic. The idiopathic means which there is no cause for it. What is called idiopathic Parkinson's disease, which generally we call Parkinson's disease, is one of the causes of Parkinsonism. The reason we stress on Parkinson's disease is because this is the only disease in different types of causes of Parkinsonism where we can treat. Achha. Rest of them are untreatable. Oh, really? So Parkinson's disease we can treat, and that's why we stress on Parkinson's disease to find out if people have got the cause of their Parkinsonism is Parkinson's disease. Now, so if it is not Parkinson's disease, so the question is, how do you find out that this person who's a bit slow, who's got a bit shaking, trembling, but remember, shaking is not always present in Parkinson's disease. Shaking is not present in quarter of the patients. So 25% people don't have shaking. So don't confuse shaking all with Parkinson's disease. Some of them do have shaking, but not everybody. One important thing that needs to be present is slowness of movement. Slowness. But this, Doctor said, slowness of movement normally comes with the age, you know. But if you add rigidity to it, or tremor, shaking, or their instability, then you think they got Parkinsonism. Then you have to see now there have been lots of research recently which helps us to figure out whether they got Parkinson's disease. It has Can we take a call? A call aa gayi, then we'll continue. Yes. Ji, hello, ji, assalamu alaikum. Hello, good afternoon, sister. The topic is very much Parkinson's disease, Alzheimer, dementia. American massive injections, some of them will be infected in the long term.
the scientists will make billions of pounds for the companies. It's a scaremongering. They सभी scaremongering करते हैं. Can you understand? उससे the companies make the money, the common man suffers. पहले ऐसे 40 years ago कुछ और disease आई, AIDS आई थी, Parkinsons आई थी. They were experimenting with the human bodies. जी जी. Long term. जी. तो 40-50 साल के बाद उसका पता लगा क्या था, क्या होना है. So all these scientists and all these companies are making billions of pounds on the common people. So this is the reality of the fact. अगर इंजेक्शन ना लगाएं, आप बिलियन पर स्पेंड करें इंजेक्शन लगाने में, how do you know all the injections are perfect? समझे बात को? They're wasting money. Sorry, what is the and question? And making a common person fool. There are no more fools anymore. What is your question, please, brother? Can you? My question. I have no question. I'm answering your question. Acha. There's a scientist, biggest scientists, they're making us fools. Acha. Okay. I'm just. They say we want to go into space. Space पे कोई नहीं जा सकता. You can't live in the space. We need to stay on the place. हमें ज़मीन पर रहना है. Down to earth. English को ये बोलते हैं. Down to earth and that's the peace on earth. मोहम्मद साहब को बहुत जबरदस्त सजा मिली थी. He wanted to fly high. वो जो है काला इल्म, black magic, जो हिंदू बोलते हैं रिद्धि सिद्धि, हमें बोलने चाहिए. हम some straightforward person हैं. Jesus Christ को उसके अपने लोगों ने धोखा दिया था. वो जो 9 disciples side में. I went to sit at a security table, and the people who were the secretary of the center, he was surprised. How come he's sitting on the table of the security of the Father? He didn't like it. From then he started hitting me from back. On my face he was very kind. On the back he was stabbing me all the time. My father knows what he done. So I don't want to hurt anybody. If I hurt somebody, I can break their legs. I don't need to do that. I don't want to shake people. So they use a common sense. जी जी. जो 10th do ना 10वां द्वार है ना. जी. जहाँ से हम देखते हैं वो third eye. जो वो motherboard. Motherboard है computer. Log into the motherboard and the goal is in. बेगम साहिबा बोला बेगम को धोखा साहिब भाग गया सुबह को. जी. चांद का रात को ऐश की और सुबह भाग गया. उसको बोलते हैं बिन. बिन का हमने तोड़ दिया निब. Bin left to right, nib right to left. When the judge makes the execution, he breaks the nib. Justice is done now. वो काला कमर टूटने वाला. Thank you, brother. आपने उनका इज़हार ख्याल किया उन्होंने अपना. Of course. अब वही जैसे कि वो कह रहे हैं कि scientists are making fool of us. Yes, हम just अपनी राय सब किया है और we should respect everybody's. Yes, of course. Yes. What I was trying to say. That's the country we live in. There's a freedom of expression. You can whatever. What I was trying to say is that how would you diagnose Parkinson's? तो जैसे trembling आप कह रहे हैं, it's not necessarily associated. No. What I'm trying to say that everybody who's got Parkinson's disease do not necessarily has tremor. Okay, that's right. Yeah. It is associated with Parkinson's, but everybody, like if I have a Parkinson's disease, I don't need to have a tremor to diagnose it. Okay. If that makes sense. Yeah? So what I was trying to say is that if you got slowness of movement, on top of that you got tremor or rigidity, you're stiff, and you got a bit unstable when you're walking, and then you possibly got Parkinsonism. But how do you a doctor tells you that you got Parkinson's disease? So usually what it is that they usually try the medication. If you respond very well to anti-Parkinson's medications and that response lasts for weeks to months, even years, then there is a likelihood that you got Parkinson's disease, not other reasons for your Parkinsonism. आप मेरी बात समझ गए? अच्छा, okay. Secondly, जो ये Parkinson's disease है, ये asymmetrical disorder है. What that means is कि ये एक साइड से ज़्यादा होता है, दूसरे साइड से कम होता है. Okay. So is a bit if you got a symmetrical disorder, यानी दोनों साइड से एक जैसा है, then you have got some other form of Parkinsonism. समझ गए? तीसरी जो चीज़ आप देखते हैं हम कि अगर उनको दवाइयों से साइड इफेक्ट ज़्यादा हो जाए, तो likelihood है कि it is Parkinson's disease. अच्छा. अगर
इसके बरक्स on the contrary they have other neurological features like उनके facial paralysis हो या किसी हाथ का paralysis है, फिर Parkinson's disease नहीं है. That's not Parkinson's disease. Okay. ये तो और रिसर्च में आजकल देखा गया है कि if you go back in their history, people who have a long history of depression, who have a long history of constipation, people who have problems with sense of smell, and also they have sleeping problems, like they have what we call REM sleep disorder. What that means is that when in our deep sleep, which is called REM sleep, we dream a lot. But those dreams, we can't act up in the sense that our body is completely anesthetized during that time. But what happens, these people can act up in dreams. अगर वो फुटबॉल खेल रहे होंगे ना, इसमें ड्रीम में वो किकें मारने शुरू. So physically, मतलब they are like kicking in the dream. Actually, या उनकी wives or partners आपको बताएंगे कि रात को ना शोर करते हैं, मुक्का मारते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं. So if people who have REM sleep disorder, depression, constipation, and फिर वो लोग आपको ये symptoms बताएंगे ना, Parkinson's के symptoms, there's a 90% chance that they have got Parkinson's disease. So मतलब जो आप कह रहे हैं कि इस तरह ये जो आपने बताया डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन एंड स्लीप डिसऑर्डर, तो ये तो किसी एज में भी हो सकता है. मतलब ये तो इन द टीन्स पीपल they can do it. But तभी कहते हैं कि शायद ये सिम्टम्स प्रीडेट करते हैं इन सिम्टम्स को, जो ये सिम्टम्स ये ना जो हम देखते हैं, स्लोनेस, स्टिफनेस, शायद 10-15 साल पहले से शुरू होता होगा ये प्रोसेस. तो मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने सही कहा कि बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, तो हम सबको नहीं कहते कि पार्किंसंस, बट यू हैव टू ओनली वेट for the people to come to you for those slow symptoms of slowness, what we call motor symptoms. Motor symptoms होते हैं कि वो उनके जो स्लोनेस ऑफ मूवमेंट्स है, या स्टिफनेस है, या शेकिंग है, या वो जब खड़े होते हैं तो गिरने लगते हैं. तो अगर उनको आप हिस्ट्री में जाके पीछे पूछें, do you have a history of depression, do you have a history of this, constipation, then आपकी डायग्नोसिस में इजी हो जाता है कि हाँ शायद अगर कोई 2 + 2 = 4, then you make it out. That process. No, I understand. जैसे कि कोई आपके पास आया है तो आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि प्रॉब्लम पार्किंसन है, तो आप ये पूछेंगे were you constipated, were you depressed, or did you have a sleeping disorder? तो वो जो पेशेंट हो कहेगा ये इसके साथ क्या ताल्लुक है. पर ऑब्वियसली ताल्लुक ये है कि कहते हैं कि शायद ये जो एक्चुअली पार्किंसंस डिजीज़ में होता क्या है कि जो हमारे ब्रेन है, ब्रेन में एक एरिया है उसको कहते हैं बेसल गैंग्लिया. वहाँ एक न्यूरॉन्स होते हैं ना, जो नर्व्स होते हैं, उनमें एक केमिकल होता है कहते हैं डोपामीन. वो डोपामीन केमिकल एक होता है, वो बहुत सारी चीज़ों में काम आता है. एक काम उसका मूवमेंट्स का काम है, उस केमिकल का. वो एक्चुअली मूड ठीक रखने में भी, बहुत सारी चीज़ों में, पेन वगैरह में भी काम आता है. बट एक काम है उसका मूवमेंट्स का. तो कहते हैं कि जो क्या होता है कि एक किस्म का एक प्रोटीन, एक एबनॉर्मल प्रोटीन डिपॉजिट होता है, उसको कहते हैं सिनिक्लिन. वो डिपॉजिट होता है उन न्यूरॉन्स पे, फिर वो एक किस्म एक चीज़ बनाता है, उसको कहते हैं हम लिवी बॉडीज ना. एक किस्म का जो उन न्यूरॉन्स पे जब जमा हो जाता है ना, वो डिस्ट्रॉय करता है न्यूरॉन्स को, और उसके बाद वो डोपामीन प्रोड्यूस नहीं करते हैं. तो उससे ये प्रॉब्लम्स हो जाती है. अब रिसर्च ये कह रहा है शायद गट से शुरू होता है ना. तो गट से जब शुरू होता है तो तभी कॉन्स्टिपेशन होता है, स्लो हो जाता है गट आपका. क्या ये is there a chance that it might be starting due to bacteria? We don't know. These are all hypotheses. These are all theories at the moment. But these things happen, that people get constipated, sense of smell chala jata hai. So because what happens, जो ये बेसल गैंग्लिया है, जो this part of the, वहाँ बहुत सारे connections जाते हैं brain के. पेन का कनेक्शन, स्लीप का कनेक्शन, बहुत सारे कनेक्शन चले जाते हैं. तभी ये इफेक्ट करता है बहुत सारी चीज़ों को.
इट सीम्स दैट जो मोटर वाली जो हिलने जुलने की चीज़ है वो एंड में शायद हो जाती है, तभी हमको नज़र आता है कि हाँ इसको पार्किंसंस। जो स्लीप और ये स्मेल और ये जो प्रॉब्लम्स है शायद वो पहले शुरू हो जाती है। अच्छा, 10-15 साल पहले। अच्छा, 10-15 साल पहले। Oh, it can. अच्छा, अच्छा। इनको कहते हैं हम नॉन मोटर सिम्टम्स। नॉन मोटर सिम्टम्स। जो मोटर सिम्टम्स होते हैं वो हमको दिखाई देते हैं, हाँ ये चल नहीं पाता ठीक तरह, शेक हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब अभी आपने जैसे कहा ना कि वो जब आप खड़े हो तो बैलेंस भी नहीं होता, बट नॉर्मली अब आजकल तो ये देखिए, आई नो समवन हु हैज गॉट डायबिटीज, लेकिन डायबिटीज में बट ऑफन दे कंप्लेन के यू नो बैलेंस नहीं है चलने में। उनकी डिफरेंट वजह है। डायबिटीज में क्या होता है कि उनको न्यूरोपैथी हो जाती है। तो ये पार्किंसन का उसमें कोई वो नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं कि बैलेंस नहीं है। न्यूरोपैथी में क्या होता है कि जो छोटी नर्व्स होती हैं, आपको पता है डायबिटीज में प्रॉब्लम्स होती है, जो ब्लड सप्लाई है होती है ना, छोटी छोटी नर्व्स को नहीं चले जाती जी जी, तो मर जाती है छोटी छोटी नर्व्स। तो आपकी जो मैसेजेस है फ्रॉम द नर्व्स टू द ब्रेन नहीं होती है। तो जब आपके पैर नहीं बोलते दिमाग को कि मुझे चलना है, तो वो ठीक तरह चल नहीं पाते। इसी तरह उनको प्रॉब्लम होती है उसको ये चलने में, क्योंकि वो दूसरी प्रॉब्लम उनको ये भी होती है कि उनको कहते हैं कि उनको ब्लड प्रेशर कंट्रोल, जब उसको कहते हैं जो प्रॉब्लम लिनबारी में भी होती है कि उनका ऑटोनॉमिक सिस्टम जो होता है, एक नर्वस सिस्टम है, जिस तरह वो क्या वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। ओके, वो उनकी नर्व्स में भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा। जब वो खड़े हो जाते हैं उनका ब्लड प्रेशर अचानक ड्रॉप हो जाता है, उसकी वजह से भी उनको ना बैलेंस में प्रॉब्लम। सो डिफरेंट रीजंस है डायबिटीज में। इसमें भी मतलब इसमें भी, बट दैट दे आर नॉट रिलेटेड। ओके, सो ओके, लाइक यू सेड के पार्किंसन जो है वो एक चीज है। सो कैन पार्किंसन आल्सो, व्हेन अ पर्सन हैज गॉट पार्किंसन, ही कैन हैव डिमेंशिया एज वेल, क्योंकि वो भी नर्व्स का ही तो सिस्टम है, बैलेंस एंड ऑल दैट। ये न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर जैसे अल्जाइमर्स जी 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 जी, बट मैंने कहा अल्जाइमर्स भी आपको पार्किंसोनिज्म देगा, यानी ये स्टिफनेस, ट्रेमर वगैरह करा सकता है, बट देयर आर टू डिफरेंट डिसऑर्डर्स। एंड डिमेंशिया अल्जाइमर में भी होता है, अल्जाइमर डिमेंशिया है, पार्किंसोनिज्म में भी, पार्किंसंस डिजीज में भी आपको डिमेंशिया होता है। पार्किंसंस डिजीज में जब आपकी व्हेन यू डायग्नोज विद पार्किंसंस डिजीज, if it lasts for 10-15 years or 20 years, it does you can develop dementia after 6-7 years. Yeah, it's called Parkinson. But then again वही बात है ना, डिमेंशिया, पार्किंसन, ये सब ओल्ड एज में हो रहा होता है। ये सारे न्यूरो, तो मगर आप कह रही हैं तो किसी एज में भी हो जाए? किसी एज में भी होता है। डिमेंशिया is not necessarily a disease of old, but you can never take age out of it. आप मेरी बात समझ गए? Not necessarily कोई चीज़ खाली बुढ़ों में होती है, but age is one of the risk factors for developing dementia. But not necessarily only old people develop dementia. The young people in 40s, 50s. अच्छा, तो dementia में फिर क्या मतलब क्या? What are the reasons? Why? In not in old, but अब जैसे कह रहे हैं 40s में भी हो सकता है. There are different reasons for dementia. Some people say, for example, can drink a lot of alcohol. They can develop alcohol-related dementia. Oh, okay. Some people have got, some genetic disorders which can predispose them to develop dementia quite early. But some people, you don't know the reason. They develop Alzheimer's disease in 40s and 50s. We don't know. Okay. So sad. अच्छा, ये कुछ hereditary भी होता है, genetics वगैरह? Parkinson's generally नहीं होता है, but there are 1 or 2% of cases which is there is some genetic connection, but not overwhelmingly. अच्छा, पार्किंसन जैसे आपने कहा कि उसका 1 is पार्किंसन, राइट? उसके अलावा कौन सी जो है जो इनके अलावा मैंने कहा ना, अल्जाइमर्स डिमेंशिया भी आपको पार्किंसनिज्म करेंगे। पार्किंसनिज्म होता है एक किस्म का, ये ऐसे मैं आपको कैसे समझाऊं कि जैसे डिमेंशिया के बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे होते हैं अल्जाइमर्स डिमेंशिया है, अल्कोहल रिलेटेड डिमेंशिया है, वैस्कुलर डिमेंशिया है। आपका कहने का मतलब है जो अल्कोहल रिलेटेड है, नहीं, ये वो सिर्फ उन्हीं लोगों के जो अल्कोहल के नॉन समझा रहा हूँ। पार्किंसनिज्म और उसकी किस्में
इसी तरह डिमेंशिया है, उसकी डिफरेंट किस्में हैं। इसी तरह पार्किंसोनिज्म की डिफरेंट रीजंस हैं। Right. एक रीज़न पार्किंसंस डिजीज़ है, एक कहते हैं प्रोग्रेसिव स्प्लेन्यूक्लियर पॉल्सी है, एक का नाम है कॉर्टिकोबेट डिजेनरेशन, एक होता है लीवी बॉडी डिमेंशिया, एक होता है वास्कुलर पार्किंसन। ये सारी किस्में हैं पार्किंसोनिज्म की। प्रॉब्लम यह है कि अगर हम उन पे बात करने बैठेंगे तो हम पूरा 24 घंटे ही रहेंगे। Right. तो पार्किंसंस डिजीज इसलिए हमने चुनी है। कॉमन क्या चीज है हम लोगों में, स्पेशल एशियन कम्युनिटी में? पार्किंसंस डिजीज देखिए सेकंड मोस्ट कॉमनेस्ट न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है आफ्टर अल्जाइमर्स। अच्छा, ओके। सेकंड आफ्टर अल्जाइमर्स के बाद सेकंड न्यूरोडिजेनरेटिव, जिसमें आपके पास जो पेशेंट आते हैं वो सारे बुजुर्ग होते हैं या यंग भी होते हैं? मैंने कहा ना कि पार्किंसंस डिजीज is generally a disease of middle and old age. I know. But it can happen in young तो people. अब मतलब हमारी एशियंस में कितनी कॉमन है ये? I don't know the exact incidence in Asian people, to be honest, but it is present there as well. But अक्सर क्या होता है हमारी एशियन कम्युनिटी में, जो पार्किंसोनिज्म की वजह अक्सर होती है वैस्कुलर डिजीज। वैस्कुलर क्या होता है कि एशियन कम्युनिटी में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उनको हार्ट अटैक्स बहुत आते हैं। जब यू हैव ऑल दिस कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, यू डेवलप प्रॉब्लम्स इन द ब्रेन, not enough blood goes into the brain, and then what happens, there's a furring of arteries in the brain. तो उनसे क्या होता है, खून नहीं चला जाता पूरी तरह ब्रेन में, तो वो डेवलप करते हैं वैस्कुलर पार्किंसोनिज्म, यानी आप स्टिफ हो जाते हैं, ऐसे टाइप जैसे पार्किंसंस डिजीज टाइप सिम्टम्स आप डेवलप करते हैं। बट वो पार्किंसंस डिजीज नहीं होती है, पार्किंसोनिज्म होता है, और उससे फर्दर आपको वैस्कुलर डिमेंशिया भी होता है। वैस्कुलर डिमेंशिया भी। अच्छा, तो उसके लिए फिर आप क्या बताएंगे, उसके बचाव के लिए क्या तदाबीर करनी चाहिए? Best is prevention, as we all say. Make sure that you eat well. जो हम खाते हैं ना, शुगर इज वेरी बैड। शुगर तो खैर शुगर हम ऐसे शुगर तो खाली मिठाई में शुगर नहीं होता है। यू नीड टू कट डाउन ऑन ब्रेड, यू नीड टू कट डाउन ऑन राइस, दैट्स सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हम लोगों की डॉक्टर साहब एशियंस की तो स्टेपल डाइट ही रोटी और चावल है। आप कैसे भाई, यू नीड टू ईट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे फॉर एग्जांपल पॉरेज हुआ, देन देयर आर ब्राउन राइस, because they're not refined. The more refined, more whiter the carbohydrates are, the bad they are for you. The bad they are for you. So, and also you make sure that if you have developed the blood pressure, you manage that blood pressure very well. Take the tablets on time. Exercise, very important. Exercise. If you have diabetes, take your tablets. Make sure that's under control. If you are obese, try to lose your weight, and take your if you do all these things, then you won't develop the complications of diabetes or hypertension, because the complications of diabetes are many fold. It affects all the systems: kidneys, heart, nerves, eyes, you name it, everything. So if your blood pressure or your diabetes under control, then you won't develop other problems, and you won't develop the vascular problems. अच्छा, तो ये बताइए कि फिर जैसे आप कह रहे हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल, तो नॉर्मली जो एक एज ब्रैकेट है लाइक फ्रॉम 60 प्लस, उसमें आइडियल फिर आपका बीपी कितना होना चाहिए? तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल के जो होता है, तो नॉर्मली हम कहते हैं 120/80 ब्लड प्रेशर होना चाहिए। हाँ, मगर ओल्ड एज में तो फिर I mean, as long as your blood pressure is around 130 उसके आसपास 130 by 80, 85, 90 तक, it's okay. But blood pressure control, I mean, what the studies in the past were done, that there is this 120/80 is an average blood pressure you should have, but for some 100/70 is normal, for some 140 but it's a different thing to explain to the audience. But for just simplicity, it's just make sure that your blood pressure is not more than 130. Your blood pressure is not more than 130. मतलब root cause of all evil? Not all evil. Really. What I'm saying to say is that if your blood pressure control it, let it not happen first of all. But people sometimes can develop blood pressure because sometimes there's no reason people do develop blood pressures. But you make sure you take medications, you exercise, you take the right diet.
there's no reason why you won't be able to go. अब जैसे कि शुरू में मैंने कहा कि अब उम्रें दराज तो हो रही हैं, लेकिन उम्रें दराज हो गई हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि जो उम्रें दराज तो हो गई हैं, बट उम्रें दराज होने के साथ साथ आपकी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ गई है ना, इन द सेंस कि द मोर, तो देखिए ना, मगर उम्रें दराज हुई हैं बिकॉज यू आर वाचिंग व्हाट यू ईट, आई मीन पीपल आर गेटिंग हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह, और क्या वजह हो सकती है उम्र दराज की? उम्र दराज की आजकल वजह ये है, मेनली वजह ये है is that because we have sort of conquered the heart, in the sense that we have got so very, very good treatments for the heart. Heart attacks and medications are so good that they keep you going for a long, long time. In the past, when you had a heart attack, that was it. There was no treatment. Right. Now you have angioplasty, open heart surgeries. There are drugs which remodel the heart, and that keeps you going for a long time. But when you are older, you develop other medical problems as well. You have diabetes, then you develop complication of diabetes. So it's very important that if you are old but you have a good quality of life, there's no point of being old and having a bad quality of life. You can't go out of the house, आप घर से बाहर नहीं जा सकते, चल नहीं पा सकते ठीक तरह, you can't look after yourself. But have a good quality of life is very important than having a long life. That's what. अच्छा, तो what is the secret? देखिए ना, ये जो है ना, good quality of life, watch what you eat, and if you're obese, you'll have all these conditions. That is a very toxic legacy, Dr. Saab. What toxic legacy? ये ना कि मतलब good quality food आप खा रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं. मैंने कहा सब कुछ खा सकते हैं, मैंने, but I'm trying to say these things in moderation, and in the sense that, you know, we sometimes once a week if you eat some mithai, no problem. But if you are eating parathas every day, that's a problem. I'm just saying that. Right. I know someone जो कि रोजाना पराठा और अंडा नाश्ते में करता है, and he's fit and smart. But the thing is that we don't know the, you know, the thing is we were just looking at that person in that point in time. We don't know what's going to happen in 5 years' time, 10 years' time, 15 years' time, 20 years' time, but because we don't know what's going on inside. Okay, okay. अच्छा, तो बहरहाल coming back to Parkinson's disease. Parkinson's disease. जी जी. तो मैं कह रहा था फिर इसके treatments है, बहुत सारे treatments है इसके, अब जो दवाइयाँ हैं, they're very good treatments. You take those medications, and those medications. लेकिन जो आपकी medication है, डॉक्टर साहब, अभी आपने खुद ही कहा कि कुछ medication के side effects भी होते हैं, तो आप एक चीज ठीक करते हैं, दूसरी खराब हो जाती है. Medications के side effects, but the medications are usually good, and the effect lasts for a long, long time. But the problem in ये medications के साथ, you have to take them many times a day, sometimes different types as well. Okay. And you develop lots of complications of Parkinson's disease. It's like a diabetes in the sense, like a chronic disease like diabetes, where you have problems with pain, you have problems with you know, your nerves don't work very well, and your blood pressure drops. Okay. And when you stand up, or you have problems with incontinence. You develop problems with sleep. You mean incontinence is related to Parkinson as well? Yes. Really? Parkinson's disease can affect muscles in the bladder, and those muscles, there's a muscle called the detrusor muscle. It can make it overactive, and when it makes overactive, you go again and again and again and again. Okay. So it also can, these you know, I was talking about this abnormal protein that Lewy bodies and with the abnormal protein in it can get deposited in places which controls the bladder in the brain, and that can cause problem with the blood. It also affects constipation. I told you before that it can cause constipation because it slows the whole system. It slows everything down. So तो डॉक्टर साहब, स्लो तो वैसे ही जब आपकी उम्र बढ़ती जाती है आप स्लो होते हैं. हाँ, but it's for example, अगर कोई 40 year का normal बंदा है और फिर 40 year का जिसको Parkinson, उसको more slow हो जाता है. That will be obvious, obviously. What I'm trying to say, it slows you extra. Even if your age is slowing you down, it slows you extra. So it just, so
it causes multiple problem. We call it is it's a neurodegenerative disorder. आपको समझ आया? Neurodegenerative means कि आपका जो nervous system degenerate हो रहा है और इसमें आपको neuropsychiatric problems होती है, यानी आपको nerves की problem होती है और mind की भी problem होती है. Mind की क्या problem होती है? Mind की ये problem होती है कि वो dementia develop करते हैं. They develop some psychosis, dementia, Alzheimer's और dementia. Different. मैं आप फिर clear करूँ. Alzheimer's. आपको मैं confuse कर रही हूँ. Alzheimer's is a type of dementia. Alzheimer's. There are different types of dementia. Alzheimer's is the commonest type of dementia. Of dementia, okay. There is vascular dementia. There's Parkinson's disease dementia. There's Lewy. There are different types of dementia. Okay, but okay. Alzheimer's is one of them. Dementia. Okay. So. ठीक है. लेकिन अच्छा ये मुझे बताएं डॉक्टर साहब, जैसे कि आपके जो पार्किंसन के लिए आप मेडिकेशन देते हैं, like it bound to have side effects. Is it possible if we can shift on to some alternative or complementary medicines जिसके side effects ना हो? There's no, as I said, there is no complementary medicine. There are some surgeries. Surgeries? Yeah, which can be done in patients with Parkinson's disease. Okay. They're very good surgeries, but the problem with these surgeries are they're very complicated and take a long time and a lot of resource. And the patients who are chosen to have those surgeries done are usually younger and fitter people. Oh. And as you probably know, Parkinson's disease happens more older and they have lots of medical problems. Yes. So it's very difficult to do surgeries in people who already got lots of medical problems. Okay. They may not be fit for the surgery, but there are surgeries available to treat. Okay. As I said, there are drugs. तो इसका मतलब अगर किसी को 40s में Parkinson हुआ है, I mean, you will. No, they try the drugs first, but if it doesn't have, if it doesn't have, there is a surgeries, a complicated neurosurgery, which happens in. अच्छा ये जो सर्जरी होती कहाँ क्या? Brain में. Brain में करते हैं neuro. What they do is they sometimes try to put the electrodes in the brain. It's quite complicated surgeries, but it's very good surgery, and people have very good, outcomes from. मतलब इसके results अच्छे होते हैं मतलब. बहुत अच्छे results होते हैं. Okay. तो अब ये कि पार्किंसन के अलावा आप दूसरी जो जेरिएट्रिक जो मेडिसिन्स हैं, जेरिएट्रिक मेडिसिन में आप जो करते हैं डील अलावा पार्किंसन के? मैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अब जेरिएट्रिक मेडिसिन क्या होता है? मैं एग्जांपल देता हूँ. ये जो जेरिएट्रिशियन होता है, ये ऐसे होता है जैसा पीडियाट्रिशियन होता है. अच्छा, ओके. तो कहते हैं ना बुढ़ा और बच्चा एक ही जैसा होता है. एक ही जैसे हो जाते हैं. ऐसे डील करता है हर एक प्रॉब्लम के साथ जो बच्चों को जैसे पीडियाट्रिशियन डील करता है. जैसे कोई इन्फेक्शन हो, कोई फॉल्स हो, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम जो बूढ़ों में होती है ना, वो हम उसको डील करते हैं. That's what geriatrician does. So if an older people falls, has an infection or has got some medical problems, they come to the hospital, they get admitted under geriatrician. Because we can manage all their problems holistically. Because we know they have different medical problems. To bring them together, that's our job. Because if you go to the cardiologist, they might treat their heart only, but they don't know that he's got osteoarthritis as well. He's got diabetes as well. He's got kidney problem as well. He's got this Parkinson's disease as well. So what is the difference between dementia and delirium? So dementia and delirium. Dementia means when you have a problem with memory. Cognition. Again, memory वही old age में ही तो आएगी ना. Not necessarily. वही मैं बार-बार ताकि I mean we want to let our usual people aware of it. Common है ये बुड्ढू में, मगर not necessarily कि आप अगर 40, 50, 60 साल के उसमें नहीं होगी. हो जाती है. Delirium भी हो जाते हैं. Delirium होता है acute confusional state. कोई अचानक confuse हो गया, अचानक within days, weeks confuse, वो delirium होता है. Delirium की वजह होती है कि बहुत सारी वजह होती है. कॉमनेस्ट वजह जो बुड्ढू में जो डिलेरियम होते हैं, इन्फेक्शन या कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, या उनको पेन होती है, या फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कोई बुड्ढे को आप या जो हो सकता है बुजुर्ग आदमी, अगर आप उसको जैसे वो बेटी के पास रहता होगा फॉर एग्जांपल, आप वो बेटे के पास रहना चाहता है, तो उसके घर का वो चेंज होने से भी वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको डिलेरियम हो जाता है. सो
तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। हाँ, ये डिलेरियम इज एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट। ओके। मगर जो लोग डिमेंशिया है, डिमेंशिया क्रॉनिक जो चलती रहती है, डिलेरियम रिवर्सिबल है कि आप उसको इन्फेक्शन ठीक करें, आप उसकी कॉन्स्टिपेशन ठीक करें, आप उसकी पेन ठीक करें, या उसको कोई डिहाइड्रेशन हुई है वो ठीक करें, तो उसकी कंफ्यूजन चली जाती है, वो ठीक हो जाता है। वाइल एज डिमेंशिया इज a irreversible problem with memory and cognition, वो different चीज है। ओके, तो डिलेरियम हो गया। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, जो लोग डिमेंशिया है, they are more prone to develop delirium, वो जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। डिमेंशिया के, हाँ, ओके, they are more prone for delirium. They are more prone to develop these acute confusional states. Okay, okay. Do you get my point? And yes, I got your point. But again, you said it can happen to any 40-year-old one as well. Delirium, yeah. It can happen, Yes. but you need to have a serious illness for a 40-year-old to be confused. Yes. You need to Yes. have, Yes. But for an older person like who's 90-year-old, a simple urine infection can make them delirious. Really? But for a 40-year-old, No, you need to, obviously if they are not. confused, there is something serious going on. Okay, okay. You अच्छा, तो अब आप सब कुछ आपने कह दिया, आप मेडिकेशन भी आप सजेस्ट कर देते हैं, और तो आप कुछ, अब क्योंकि हमारा टाइम अब खत्म हो रहा है, आप देखिए टाइम ये तो पता नहीं चल रहा है, टेंजेंट्स में भी गए ना, दूसरे डायबिटीज वगैरह भी। हाँ जी, तो अब आप नसीहत, मैं चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को आप बताइए। नसीहत ये है कि जब आप कोई भी ये है, आपको पार्किंसंस डिजीज का मैं बताऊँ, अगर आपका कोई अपना रिलेटिव है, mom, dad, you just, if they're slowing down, if they're slowing down and they become stiff, and also sometimes important thing is when they start to get frozen in their chair, they are not able to get up. अच्छा. Or if they are walking and then they get sort of slowly, they find it very difficult to turn around. Okay. Yeah. Then, and also on top of that, if you feel that they are a bit shaking, or they find it difficult in turning around, or slowly, you know, what happens, they can't express themselves, you know, उनका face mask जैसा बन जाता है। अच्छा। Think about Parkinson's disease. Think about face mask जैसा बन जाता है। And speech भी slow हो जाती है। स्पीच स्लो हो जाती है। हाँ, क्योंकि मतलब स्लो किस तरह को, कुछ मतलब आप पहले बड़े दमदार तरीके से बोलते थे ना, फिर आहिस्ता उसका वॉइस ना वीक फीबल हो जाए। अच्छा। तो ये जरूरी नहीं कि उसकी वॉइस फीबल है तो पार्किंसंस है। You just have to put all these things together. Maybe get to see the doctor and see possibly have they got, they may not have it. Just something. They might. अच्छा, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई नो, आई अप्रिशिएट दैट यू हैव टेकन टाइम आउट फॉर मी इन सोशल वॉइस, आप आए हैं। इंशाल्लाह फिर अब हम जो पार्किंसन की दूसरी ब्रांचेज हैं, आफ्टर अ वाइल विल टॉक अबाउट देम एज वेल, ताकि मैं चाह रही हूँ कि हमारी एशियंस में बहुत सारी चीज़ें जिनकी अवेयरनेस नहीं है, एंड दिस इज ऑल्सो a service to them from us. थैंक यू सो मच डॉक्टर। नाजरीन, गुफ्तगू उम्मीद करती हूँ कि कुछ फ़ायदेमंद हुई होगी, कुछ आपको भी नॉलेज हुई होगी, अवेयरनेस हुई होगी कि GBS क्या होता है, पार्किंसन क्या होता है, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, पार्किंसन किसी भी एज में हो सकती है, एंड देयर आर रीजंस एंड फैक्टर्स फॉर दैट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। रमज़ान करीम, रमज़ान में बारकत महीना है, अहलेबैत टेलीविज़न को भी ज़रूर याद रखिएगा, और सईदा रिजवी को भी रोज़ा खोलते वक्त ज़रूर याद रखिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, सईदा रिजवी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।